Good afternoon, everyone. Any questions from what we discussed yesterday? Good morning, sir. Siddharth here. No question. Okay. So, yeah. So you discussed this yesterday. Yeah. Moving to next slide. So interest expense. Now we're saying when you're saying interest expense, this interest expense is a average loan outstanding into interest rate. It's typically now the example that we discussed yesterday. This is the interest amount that we calculated. Now, sorry, not this one. This one. Now, for example, let's assume on 1st Jan, if you have a loan outstanding of, let's assume, 1 lakh rupees, so at the end of the year, so suppose when you're charging an interest, and let's assume interest rate is 10%, when you're charging interest at the end of the year, it's pretty simple that it is this loan outstanding amount into interest rate. That's what we have done yesterday. But if so suppose this is loan 1, and let's assume on 1st of November, same year, so let's put years as well. So on 1st of 2019, company has taken another loan of, so suppose 50,000 rupees. Now, in this case, the interest for the entire year would be, so on this 1 lakh rupees,
the interest for the entire 12 months will be charged. If our accounting period that we are following is, let's from Jan to December, on this loan one, which is 1 lakh rupees, the entire 12-month interest will be charged. Any doubt to this point? And for the remaining 50,000,
Sir, can you just check now because it's sorted? Nishant sir, are you there? I'm audible to everyone, guys. Yes, I mean Yes, you are I mean, you are audible. Okay. Let me call Nishant sir. Guys, just give us a 2 minutes only. I think Nishant sir का internet issue हो रहा है. And so just give me 2 minutes. We are just sorted out. निशांत सर आपका माइक बंद आ रहा है.
So now it's showing well. Hello? Hello? Am I Sir, audible? you are audible. Yes, sir. You are audible now. Okay, finally. So we were कहाँ पे थे हम लोग? We were discussing this yeah. So I don't know where did you lost me. So ये तो सर ये 833 का जो कैलकुलेशन है ना, वहां से आपका म्यूट हो गया था एक्चुअली, वो वहां से सर बताओ. okay. So this second loan, so Siddharth, can you go and mute please? So this second loan, Oh, sorry. which is 50,000. This loan is taken in 1st of November. Hello. Sir, again, not Hello. audible. Sir, again voice lost. So this yeah, so the company has taken loan 2, and loan 2 is taken on 1st of November. And so for the first loan, which is this 1 lakh, let me get a different color. So for the first loan, this 1 lakh rupee, this 1 lakh, this 1 lakh loan, this entire 10 interest of 10,000 will be calculated for all 12 months. This will be calculated for all 12 months. But for the second loan, the interest will be calculated only for 2 months, November and December, because the loan is being taken on 1st of November. Hence, the formula for the computation of loan, आप वो देख लीजिए. मैंने 2/12 किया because only 2 months के लिए calculate करना है. यहाँ पे किसी को doubt है तो पूछिए.
ठीक है. So hence the total interest for the entire year is loan 1 and loan 2 के इंटरेस्ट को मैंने ऐड कर दिया. Now the problem is this one. Now in the second scenario, you're not aware that when second loan was taken, so this date of 1st November is not available to you. Is not available to you. Then how would I compute the interest on this? Should I calculate the interest for entire 12 months, or how would I compute the interest rate? Problem समझ आया सबको? What is the issue? Hello, am I audible? Hello. Yes. Yes, you're audible. So now, because I don't know the month or the date in which this loan has been taken, so it's not practically possible to calculate the interest for the entire 12 months, because that's could also be technically wrong. So what we do, we calculate this for a 6 months average कर देते हैं इसको, और hence average का जो formula है, we look at this formula. So the average formula हो जाएगा opening balance plus loan borrowed minus loan repaid. इस एग्जाम्पल में repayment कुछ है नहीं, divided by 12 divided by 2. So which means I will calculate average loan. So मान लो तो प्रिंसिपल ट्रिक में मैंने 0 लिया. So then the average लोन की जो वैल्यू है वो होगी this plus this minus this divided by 2. Be careful for the formulas, because the divide by 2 है वो सिर्फ न्यू लोन और प्रिंसिपल पेमेंट को होगा. देख लीजिए फॉर्मूला, देख लीजिए. Any questions this? So hence, as per the first formula of this slide, my interest would be this into interest rate करूँगा, this into this. So when you don't know the date, you first calculate the average loan and you compute the interest on that average loan. Note down कर लीजिए इसको.
Any doubt in this? Are we clear with this slide now? The formulas in this slide? Hello, am I audible, guys? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So is this slide clear? Guys, please respond, because otherwise, I don't know, there's some issue, so I'm not able to. So by default, I'm going on mute by again and again. So I'm not sure which portion you're able to hear me. So please, when I'm asking you a question, please at least if you would respond, it will help. So are we clear with this slide? Yes, sir. Yes, sir. We are clear, and you're audible also. Okay. So this is the complete loan schedule. So what we discussed yesterday, that there are two ways that loan schedule can be created. One is using the PMT formula, which keeps your repayment amount, constant, and one where your repayment amount is not constant, is variable. And now we have also understood how do we compute the interest, especially when dates are not given to you. Similarly, अगर यहाँ पे repayment होता, let's assume 10,000 का repayment होता, so again that also will that will also get divided by 2. Okay, so we should discuss. Yeah. So company takes loan in two categories. One is a working capital loan, and other is a long-term loan. So we'll discuss long-term loan. So any questions in long-term loan before we go to working capital modeling? Okay, so what is working capital? Working capital is the capital which is required to fund your day-to-day business. Is a funding which is required to meet your temporary shortfalls, your day-to-day requirements of the funding. Now, suppose, so this would be so suppose a company has a forecasted cash balance. So company has a policy, let's assume they will hold a minimum cash balance of, let's assume, 100 rupees. They will maintain a minimum cash balance of 100 rupees. But you're expecting, so let me put numbers to this. So company has a policy that the minimum cash balance is 100 rupees. They should have 100 rupees cash balance at any point of time. And your forecasted cash balance, scenario 1, is suppose 60 rupees. Okay. So you should have 100 at any point of time, but you are expecting next year you will have 60. So you will have a shortage of 40 rupees. So now you need this 40 rupees loan, and suppose from bank your loan limit
is 30 rupees. So what does this mean? You need 40 rupees, but from the bank, your limit to take the loan for working capital is only 30 rupees. Now, how much loan you will get from the bank? 40 or 30? 30. That's why I have put minimum formula. And you will get 30 loan from the bank. So, any doubt in this point? Similarly, अगर बैंक की लोन लिमिट 70 होती तो मेरी लोन लिमिट 70 है बट मुझे जरूरत 40 की है, तो मैं कितना लोन लेता? तो मैं 40 लेता। समझ आया मिनिमम फॉर्मूला क्यों लगाया गया? And so any doubt in this scenario? No, sir. So So can you repeat this formula again? so अगर 60 का लोन की जरूरत है, तो 60 का 40 का शॉर्टेज है, तो मैं 40 का और लोन अमाउंट में डिफरेंस देखूंगा और वो डिफरेंस अमाउंट का लोन लिया जाएगा। तो अगर मेरे को 30 का लोन लिमिट है और मेरे पास 40 का शॉर्टेज है, तो मैं 30 लूंगा, मिनिमम लूंगा। अगर 40 का मेरे पास शॉर्टेज है बट मेरे पास लोन के अमाउंट 70 है, तो भी मैं 70 नहीं लूंगा, मैं 40 ही लूंगा। Now let me change the scenario. So if minimum cash required again is 100, this remains same, and your forecasted cash balance is 120 rupees. So as per this bracket, we'll get an answer of minus 20. यहाँ तक clear है? Yes, sir. Yes. If the loan amount of the bank, let's assume that is 70. When I put a minimum formula, so out of 70 and minus 30, what will come out of this bracket? Minus 30, because I put minimum formula. ये clear है यहाँ तक? Yes. Which is technically wrong, because I can't take a loan of minus 30 from the bank. इसलिए मैंने क्या किया है, इसको 0 के साथ मैक्सिमम लगाया हुआ है यहाँ पे। What will happen, 0 और minus 30 में जब मैक्स लगेगा तो बाहर 0 आ जाएगा, यानी मुझे कोई लोन की जरूरत नहीं है। This is the way this entire formula will work. I didn't get it, last one. So मेरा अगर minus 30 है, I can't have a minus figure for the loan. I have to take the loan from the bank. Minus 30 means I am giving loan to the bank. तो उस minus 30 को मुझे actually zeroize करना है. So that is why 0 के साथ लगा के उसको maximum किया. So मैं इसको Excel में लेके जाता हूँ इसको.
आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा. So let me remove this. So अगर मेरा मिनिमम कैश बैलेंस पॉलिसी है 100 रुपीज और फर्स्ट सिनेरियो मेरा फोरकास्टेड कैश बैलेंस 120 आ जाता है, इन दोनों का डिफरेंस आंसर क्या आएगा? -20. और मेरी लोन लिमिट अगर है 30, सो 30 और -20 का अगर मैं मिनिमम लगाऊंगा तो आंसर बाहर क्या आ जाएगा? -20 आ जाएगा. यहाँ तक डाउट है किसी को? आई थिंक आई एम नॉट श्योर हु रेज्ड दैट क्वेश्चन. वाज इट पूर्वा? Yeah, it's clear, sir. So when you will have -20 figure, now you cannot have an answer which is -20 in this case because you need a loan. How much loan you need from the bank cannot be -20. And why can't be -20? Because आपको कितना कैश की जरूरत है? 100, बट आप एक्चुअली आपके पास कैश कितना है? 120. आप तो सरप्लस में हो, आपको लोन की जरूरत नहीं है. तो हेंस -20 आंसर नहीं आना चाहिए था, 0 आंसर आना चाहिए था. तो उसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 रखा फॉर्मूले में और इनका मैक्स लगा दिया. सो व्हाट विल हैपन? 0 एंड -20 में जब मैक्स लगेगा तो फाइनल आंसर बाहर 0 आ जाएगा, विच इज द राइट आंसर. Yeah, sir, got it. Got it, sir. जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है. So this is what is mentioned on this slide. In case no questions, so this completes our debt modeling. So in debt modeling, there are two types of debts which is possible. One is a long-term debt, and second is a short-term debt, which is a working capital loans. And we've discussed what each of these in terms of the actual application. As I told you yesterday, the plan is that when we take that case or when we take that deal, we'll do these again into the Excel, into that case. How do we actually combine this, and then we use these from a modeling perspective. But as an individual concept is what we're trying to close in these sessions before we move to modeling. So any doubt in entire debt modeling or debt computation, be it a long term, be it a short term? I'm giving you a minute or so. Just try and see in case you have any questions, doubt, anything that's still not clear. सर हमारा फोरकास्टेड कैश बैलेंस कहाँ से आता है? So forecasted cash flow statement बनाएंगे, उससे आएगा.
Okay, okay, understood. Thank you. So any questions, guys, before we close this dead piece? No, sir. Clear. Okay. Let's move to the tax piece. आई थिंक ये आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा आपके जो सेशंस हुए थे केपीएमजी के साथ. डेफर्ड टैक्स डिस्कस हो चुका है, करेक्ट? हाँ सर. गाइस, ठीक है. Yes, So yes, sir. we'll not go through this again, deferred tax. Okay, so let's come to the computation of this. Now, yeah. So tax modeling. So PPT for 2017. So let's assume for 2017, you have a loss of 100 rupees. So for this year, your taxable profit is how much? 0. Because you will only pay tax when you have a profit. If you have a loss, you don't have to pay taxes on that losses. Are you with me till this point? Yes, sir. And let's say the tax rate is 33%. So hence my tax for the 2017 is 0 taxable profit into 33% tax rate. Hence my PAT is
minus 100. Any doubt for 2017? Guys, note करना है, note कर लीजिए because you will not get these in slides, these working. So now for 2018, you get a profit of 180 rupees. So it's positive now. And the accumulated loss is 100 rupees because this loss of the previous year, which gets accumulated for the next year. Any doubt till this point? Morning, sir. Hello. Hello. So Hello. so the income tax allows your losses, your accumulated losses to be offset with your profit in this year. So what does this mean? In 2018, you have earned profit of 180 rupees, but you still have a carry forward loss of 100 rupees from the last year. Hence, your taxable profit, the profit on which you have to pay tax is only 80 rupees. Hence, your tax is 80 rupees per 33%. Hence, your VAT is PBT minus tax payout 153.6. हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? सर थोड़ा पीएटी वापस बोल दीजिएगा. So PAT is your PBT minus tax. Any doubt till this point? So let's assume for 2019, again the company gets a profit of 220 rupees. Now there is zero accumulated losses because whatever losses were available वो offset हो चुके हैं. So आपका taxable profit पूरा ये हो जाएगा. And your tax would be again 33% of this. And your PBT is again as if doubt is put.
Are we clear with this? Any questions, any queries? No, sir, I'm good. No, sir. Okay. The another scenario which is possible is suppose 2018 में अगर आपका प्रॉफिट सिर्फ 80 रुपीज होता तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट फिर से 0 हो जाता और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉस 20 हो जाता और यहाँ टैक्सेबल प्रॉफिट आपका 200 हो जाता। ये सिनेरियो भी देख लीजिए आप लोग। टू 2018 में we had an accumulated loss of 100 rupees जिसमें से 80 ऑफसेट हुआ, 20 बच गया, तो 20 जो बचा वो 2019 में कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो जब तक आपका ऑफसेट नहीं होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, सब्जेक्ट टू सम रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम कितने ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हर कंट्री का हर लॉ का अपना अलग अलग होता है। तो ये इसका 2018 थोड़ा वापस बोल सकते हैं क्या? 2018 में आपका जो प्रॉफिट है वो 80 रुपीज का था और जो लॉस था 100 रुपीज का था। जो 20 रुपीज है वो कैरी फॉरवर्ड होकर 2019 में, एंड 2019 में फिर वो 220 के प्रॉफिट में से आपने 20 का जो लॉस है वो एडजस्ट किया, बचा 200, उस पे प्रॉफिट, उस पे टैक्स पे किया। ओके, अंडरस्टूड सर, थैंक यू। हाँ जी, कुछ और डाउट? सर जस्ट वन थिंग, 2018 का पीएटी तो -20 होना चाहिए ना? सॉरी, 2019 का
2018 का पैट 2018 का पैट कितना होना चाहिए? -20। क्यों -20 क्यों होगा? आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स 80 है, आपका लॉस आपने -100 किया है, सो 80 - 100 इक्वल टू -20, राइट? अरे वो पैट थोड़ा होता है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। पैट होता है कि आपका जितना प्रॉफिट है उसमें से कितना टैक्स पे किया आपने, बचा हुआ प्रॉफिट। तो आपका टैक्स से पहले ओ, कितना प्रॉफिट था? ओके, अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड माय फॉल्ट। Any doubt in this taxation modeling? तो स्लाइड में काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखा है, तो मैंने बहुत सिंपल इजी तरीके से कर दिया एक्सेल में आपके लिए। यस सर, एग्रीड। और लास्ट टाइम किसी कुछ पूछना है? Yes, sir, understood. सर ये फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें कैलकुलेशंस में टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए? इफ अगर हम 80 - 100 करते हैं देन उसके बाद वो 0 आ जाए -20 की जगह, तो ये एक्सेल का फॉर्मूला होता है ना ऐसा? हाँ, ये फॉर्मूले यहाँ पे हैं। नाउ पहले टैक्सेबल प्रॉफिट करते हैं। व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? तो उस साल का प्रॉफिट है माइनस एनी एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो इतना तो आई थिंक सिंपल पीस है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर्स रख लेते हैं यहाँ पे। सपोज आपका जो मेरे एग्जांपल थे उस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। सो सपोज अगर आपका 80 रुपीज उस साल का प्रॉफिट है और 100 रुपीज एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो -20 बाहर आ जाएगा। Now my taxable profit cannot be minus figure. My taxable profit cannot be minus figure. ठीक है, तो वो मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको 0 के साथ मैक्स किया हुआ है, इससे बाहर 0 आ जाएगा। यही चीज पूछ रहे थे आप? यस सर, 0। थैंक यू सर।
Is everybody clear with this formula? Yes, sir. एंड टैक्स का फॉर्मूला क्या होगा? जो टैक्सेबल प्रॉफिट यहाँ से आएगा उस पे इंटू टैक्स रेट, एनी डाउट इन टैक्स फॉर्मूला, करंट टैक्स? And then you have accumulated losses. So accumulated losses is what? प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स थे और जो प्रीवियस ईयर के accumulated losses थे. So for example, हमने यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें मेरे पास प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 80 रुपीज था और प्रीवियस ईयर एक्यूमुलेटेड लॉसेस मेरे पास 100 रुपीज था. तो इन दोनों का डिफरेंस -20 आ गया. तो -20 0 से बाहर -20 आ जाएगा और मैंने यहाँ माइनस साइन लगा रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो फाइनल आंसर +20 आ जाएगा. यानी नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी इन दोनों को एडजस्ट करके यहाँ वाले नेक्स्ट 2019 में 20 आंसर आ गया और वो मैं इस फॉर्मूले से लेके आऊंगा जो मैंने अभी हाथ से टाइप किया. ऐसे समझ आ रहा है? थोड़ा सा हेवी है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी स्लो. सर ये रिपीट करो ना सर. तो अगर मेरा 80 रुपीज का प्रॉफिट है, मेरा 80 रुपीज का प्रॉफिट है और मेरा 100 रुपीज का प्रीवियस ईयर का लॉस है, तो मेरा इन दोनों को जब माइनस करूंगा तो -20 आ जाएगा. और Yes, इस sir. ब्रैकेट से बाहर फिर -20 आ जाएगा. तो बचा क्या, -20 0 और सॉरी 0 -20 और उसके बाहर मैंने मिनिमम साइन लगाया हो. तो -0 -20 का मिनिमम करेंगे तो बाहर क्या आएगा, -20. और मिनिमम sir. साइन के बाहर भी मैंने माइनस साइन माइनस फॉर्मूला लगाया हुआ. तो -20 इंटू माइनस जब होगा तो +20 आंसर आ जाएगा. Okay, sir, got it. हाँ जी, एनी डाउट इन दिस? सिद्धार्थ, इज दिस क्लियर?
सर क्लियर। सर 2018 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही, हैशटैग वैल्यू आ रही है। इफ अगर हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट 0 होता है। सो इस एक्सेल में बोल रहे हो आप? यस सर, अगर टैक्सेबल प्रॉफिट 2018 का 0 है तो टैक्स कैलकुलेशन में वैल्यू आ रही है, 0 नहीं आ रहा। टैक्सेबल प्रॉफिट 2018 का 0 है, 0 ही तो रखा है मैंने। ये 0 है, बट उसके नीचे जैसे 0 आना चाहिए, नीचे 0 एंड 80 आना चाहिए पैट, क्योंकि टैक्स के ऊपर जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो जो फॉर्मूला लगाया है मैक्स वाला, उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है, हैशटैग वैल्यू आ रही है, वैल्यू नहीं आ रही, पूरी 0 नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। नहीं मुझे समझ आया, क्या सिनेरियो प्लॉट किया आपने? आपने चेंज किया है क्या? जो मैंने कर रखा है उससे कुछ चेंज किया आपने? सर मेरी F302 की वैल्यू नहीं आ रही, अप्लाइंग फॉर्मूला, F302 की फॉर्मूले की वैल्यू नहीं आ रही। यानी कि जो आपने करंट टैक्स निकाला था वो वैल्यू नहीं आ रही है, इफ अगर मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट 0 है। तो क्या फॉर्मूला लगा इसमें? तो फॉर्मूला हमने टैक्सेबल प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट लगाया ना। हाँ, सो वो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा अगर 0 है तो। आप चेक करो, आपने कुछ फॉर्मेटिंग या कुछ एक्सेल में कुछ एनेबल किया हुआ होगा, उसको नंबर्स में लेके आओ फॉर्मेट को। 0 × 33% 0 नहीं आएगा क्या? आ गया सर। वो फॉर्मेटिंग इशू है आपके सेल का। थैंक यू सर। किसी और को कुछ डाउट है टैक्सेबल प्रॉफिट में? टैक्स मॉडलिंग मेरी तरफ से हो गया। So we're done with debt, we're done with working capital, we're done with tax. तो ये चेंज इन टैक्स रेट का इफेक्ट कैसे आएगा इसमें? चेंज इन टैक्स रेट का इफेक्ट, तो वो टैक्स रेट चेंज हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आई कैन क्रिएट एन अनदर, यहाँ अलग से कर देते हैं टैक्स रेट, हर साल का अलग अलग टैक्स रेट कर लो आप। तो फॉर 2037 का 33%, यहाँ पे 33%, और लेट्स अज्यूम 2019 से टैक्स रेट चेंज होकर 30% हो जाता है। तो रादर देन मल्टीप्लाइंग विद दिस वन नंबर, आप इंडिविजुअली हर साल के अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में? अक्यूमुलेटेड लॉस में कोई फर्क नहीं आया ना? नहीं कुछ अभी नहीं। ओके।
ठीक है। चलिए, so if this is clear, this completes your tax calculation. Nancy, in case you're not asking anything, can you go on mute, please? What I am trying to understand from you is the last. If you can go back to the Excel, there you wrote tax rate in the third column as 30%. Yeah. Yeah, but we charge 33%, right? हाँ, वो मैंने किया 200. नहीं है, जस्ट वो दिखाने के लिए क्या, अगर आपको चेंज करना है, सो दिस टैक्स जो मैंने अभी मल्टीप्लाई किया है, सो इसको Okay, मल्टीप्लाई okay. Assume you have just assumed if it's 30%. I thought you just okay. Okay. ठीक है. So I'll consider this as closed. Now moving to operating incomes and expenses. Now, so income from associates. So what do you mean by income from associates? For example, before I go to that, you understand what is non-operating income, correct? ये डिस्कस हुआ होगा आपका पहले, previous sessions सब करके रहे. Right, do you understand what is non-operating income and expense? Yes, sir. Yes, sir. Understood. Okay. So suppose when I'm preparing P&L, suppose I have an investment of 10% stake in other company. ठीक है, so अगर मेरे 10% स्टेक है किसी कंपनी में, यानी उस कंपनी के जो प्रॉफिट होंगे वो 10% उस पर मेरा क्लेम हो जाएगा. Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. Okay. And hence अगर मुझे, so suppose let's take an example. So suppose company A has invested 10% in company B, and if we are preparing forecasted P&L for A, then I also need profit info for company B. हाँ या ना, कि कंपनी बी की जो 10% प्रॉफिट है वो कंपनी ए के P&L में आएंगे. Yes, correct, sir.
Hence, now the question is, should I also prepare detailed P&L for B similar to A? That's the question. So this is a problem, correct? You will again, now rather than preparing for A, you will prepare for B as well. And what if B also has some investment in company C? Where do you stop? Has everybody understood what's the problem here? So actually, can you repeat that, please? So if company A has an investment in company B, do we also need to prepare the P&L for company B or not? Minority interest can be used, sir. Irrespective of the minority interest, it has nothing to do with the minority interest. So आपके कंसोलिडेशन के सेशन हुए हैं ना, जिसपे आपको कंसोलिडेशन कराया हुआ कि कंपनी कैसे कंसोलिडेट होती है, if you have a majority stake, वो सब हुआ है ना आपका? जी सर. So माइनॉरिटी स्टेक में कंसोलिडेशन तो ना होता है, पर सी माइनॉरिटी स्टेक में, so for example यहाँ पे कंपनी A का 10% स्टेक है कंपनी में, तो दिस इज नॉट द कंट्रोलिंग और द मेजॉरिटी स्टेक, बट स्टिल मुझे कंपनी बी के 10% प्रॉफिट का पोर्शन तो कंपनी ए के पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा ना. So we don't need to prepare detailed P&L. We just need the profit figure so that 10% of it can be allocated in our P&L as an income. तो वो डिटेल्ड वो प्रॉफिट का फिगर कैसे आएगा जब तक आप पीएनएल नहीं बनाओगे? स्वप्न, मैं अगर आपको पूछूं कंपनी बी का नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना होगा, अगर मैं कंपनी का पीएनएल नहीं बनाऊंगा तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट पे कैसे आऊंगा मैं? Correct. If it's not readily available, then we'll have to do the detailed P&L. रेडीली अवेलेबल कैसे होगा? ये फोरकास्ट पीएनएल की बात हो रही है. कोई कंपनी अपना नेक्स्ट ईयर का पीएनएल पहले तो बताता नहीं है, ये तो कभी भी रेडीली अवेलेबल नहीं होगा. Right. Now how do you address this problem with this slide? So first, is this associate a significant associate? Which means, is the company B is a significant company B is a significant revenue या profit या dividends आने वाला है क्या? If the answer is no, it's very small amount. कंपनी A का टोटल P&L 100 करोड़ का है और कंपनी B से इससे पिछले ईयर में हमें दिख रहा है कुछ few thousand rupees आते हैं, 10,000 rupees आते हैं. It's not significant amount against a crore P&L or turnover. Some few thousand or few, probably a lakh probably is not too relevant. So अगर मैं 1 करोड़ के P&L टर्नओवर में अगर 1 लाख का टर्नओवर भी देख रहा हूँ, एक लाख का डिविडेंड पेमेंट भी देख रहा हूँ, इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट टू कंसिडर, करेक्ट? सो इट्स नॉट सिग्निफिकेंट. अगर सिग्निफिकेंट नहीं है, देन आप क्या करते हो? इनकम फ्रॉम एसोसिएट्स, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया और उसका एक्सपेक्टेड आरओआई जो है, सो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कंपनी बी में 50 लाख का किया और उस 50 लाख का आरओआई 10% है, सो मैं 50 लाख का 10% I put as income received or income earned from my investment. I will not do this entire computation of preparing P&L. Any doubt on this first piece, which is no? ठीक है. Now suppose if this is a significant amount, आपका total P&L ही 3-4 लाख रुपए का है और उसमें से
50% या around 1 lakh rupees कंपनी बी के डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट से आता है. सो इट्स अ सिग्निफिकेंट. द आंसर इज यस. सो नाउ बिकॉज वो सिग्निफिकेंट है हमें पीएनएल बनाने की जरूरत है. बट इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू? Just give me a second. Just give me a second. Yeah, so so if it's significant information, significant investment, but information is available नहीं है, तो मैं कुछ मेरे पास information नहीं है, मुझे उसका revenues नहीं निकाल सकता, वो unlisted company है, let's assume if information is not available, then I have again no choice but again to go to the shortcut method of calculating return the way I explained earlier. Scenario 2. If the information is available for company B, the information is available and you can forecast detailed P&L. So you should prepare detailed forecasted P&L for company B. और company B का जितना भी income आता है, उसका 10% you should bring it back to the company A. That's the chronology and flowchart that you need to refer for such cases. देख लीजिए कोई doubt है तो पूछिए. हाँ जी, कोई doubt इसमें? So what did you say about the 10%? 10% मैंने एग्जांपल में 10% इन्वेस्टमेंट स्टेक लिया ना, तो वो 10% यहाँ से आया है. So two questions. One is when you is this added in the other income part of the P&L? And second question is if the company B makes a loss, can you use that loss to offset your profit and pay a lesser amount of tax? So your first question, will this be added in the other income? The answer is yes. एक अलग से कैटेगरी बनती है P&L में, income from investments या dividend received या dividend earned, एक अलग से कैटेगरी बनती है P&L में. ठीक है, तो वहां पे जाएगा ये. ठीक है. Your second question, in case a company B is making loss, can you offset? The answer is yes and no both. It depends कि आप कौन सी jurisdiction के income tax को follow कर रहे हैं. In India, आप तभी कर सकते हो जब आप controlling stake रखते हो. ठीक है. So if you're only holding 10%, you will not be able to offset. But in some few jurisdictions,
आप वो कर सकते हो. लेट्स एनीवे वी आर नॉट गेटिंग टू दोस फ्रॉम इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव, बट इंडिया में आप 10% पे नहीं कर पाओ. Okay, sir. Understood. Okay. Any other question, guys? Yes, sir. Sir, we just have the two scenario. One is we can forecast, and one is we can take the expected rate of return. And so, what if we do not have both of these things? Like if our investment into a new venture, into a new startup. No, sorry, could you repeat your question? Sir, in these two scenario, we have just two things. One is we can forecast the income statement, and second is we can take the ROI. And what if we are invested into a newly startup and we do not have both of these things? Neither we have the ROI. So if it's a newly startup company, then again it's a complicated scenario, and that's why we discussed yesterday. अगर एक रनिंग कंपनी है तो कंपनी बी अगर रनिंग कंपनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं हिस्टोरिकल 4-5 साल का एवरेज देख सकते निकाल सकता हूँ व्हाट इज ROI. अगर एक रनिंग Yes, कंपनी होगी तो यस आई विल नॉट हैव एन हिस्टोरिकल ट्रेंड, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर मेथोडोलॉजीज जो हमको यूज करनी पड़ती है टू कंप्यूट, एंड दैट्स व्हाई वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे कि कौन सा करना चाहते हो आप, रनिंग कंपनी करना चाहते हो स्टार्टअप कंपनी. और मैं कल यही चीज आप लोगों को बोल रहा था कि अगर मैं एक स्टार्टअप कर लेता हूँ, ठीक है, सो रनिंग कंपनी उसका सबसेट है. तो मैंने इफ आई अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर अ मॉडल फॉर स्टार्टअप कंपनी, आई वुड बी एबल टू प्लॉट फॉर अ रनिंग कंपनी बिकॉज उसका सबसेट होता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन आसान हो जाती है, बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. But for a running company, for a startup company, I have to create everything on my own, right? So if I understand how to create every number on my own, and now if somebody says, okay, out of 20 numbers, 18 are available, but you only create 2, that's easy job for me. But if I understand running company, then if somebody tells me now you do the startup, I can't do it because then I have no way to अंडरस्टैंड हाउ डू वी कंप्यूट दोज नंबर जिसका हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल नहीं है. सो ये जो एग्जांपल आपने पूछा, अगर हम लोग रनिंग कंपनी नहीं, अगर हम स्टार्टअप कंपनी लेते हैं तो ये हम करेंगे कैसे मैं फोरकास्ट करता हूँ उसके रिटर्न्स क्या है, ROI कैसे फोरकास्ट करता हूँ. That's why I told that's why I said yesterday कि it's more complicated for a startup visa with a running company. Okay, sir. Anything else? सर ये सिग्निफिकेंस जो नो हम लोग लेते हैं उसमें कुछ ऐसे परसेंटेज है कि इतने परसेंटेज तक हम लोग वो ये कर सकते हैं कि ठीक है हम लोग कंसिडर करना है नहीं करना है. वो आपका एनालिस्ट का कॉल है. अगर आप ये पूछ रहे कि कोई नंबर है कि 20% का सिग्निफिकेंट है कि 25% सिग्निफिकेंट है, ऐसा कोई नंबर नहीं है. वो आपको एज ए इंडिविजुअल एनालिस्ट डिसाइड करना होता है. इसीलिए एक ही कंपनी के एक ही टाइम में 2 लोग एनालिसिस करेंगे, दोनों का रिसर्च अलग अलग आता है क्योंकि ये सब चीजों की सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है. ओके सर, ओके क्लियर. हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? So just a side question: if the company say it is not issuing any dividends or anything, it just has a profit after tax or something, but you can use as company A, you can use the company B's share price to add or something like that in your P&L or balance sheet. No, I will not add the share price because the share price, suppose if the company
B is share price is moving up and down. That movement of up and down is not my P&L, correct? No, So sir. I will But not in add that, the share price. I will not add the share price neither to my P&L, neither to my balance. okay, understood, sir. That share price is used for calculating the market value of company A, because market value of company A जब मैं कंप्यूट कर रहा हूँ तो उसमें उसकी जो इन्वेस्टमेंट की करंट मार्केट वैल्यू है मुझे वो भी चाहिए होती है कंपनी बी में जो करी उसमें मैं शेयर प्राइस यूज करता हूँ. बट व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग दी P&L एंड बैलेंस शीट उसमें कहीं पे भी शेयर प्राइस की वैल्यू यूज नहीं होती एक्सेप्ट दोस MTM computation again, which is more relevant from an income tax perspective. Even I'm not explaining, at least the purpose of the session of this, the objective of the session is not to teach you tax income perspective, but except those MTM computation, the share price is not used for the P&L and balance sheet. Understood. Yeah. Anybody has any question on this? This is again important piece in terms of how to decide whether to go for the P&L for my associate or not. Anything else? ठीक है. So in case no, so इतना रखेंगे because आगे का portion फिर start करके खत्म नहीं होगा. So just before we close, just couple of things. So we've done modeling on the revenue side. We've done modeling on the operating expense side. We've discussed modeling on the capex side. ठीक है. ये हमारा part 1 था previous PPT का. And then PPT 2 still work in progress, but अभी तक हमने जो कर लिया है is your debt, long-term debt. Then you've done working capital. Then you've done tax, both from an accumulated losses perspective as well. And now what you've concluded and what you've done is the how do you decide and take the call whether you want to for the associate or not. That's what we've done so far. So last time, any doubts in this part before we close for the day? Guys, I'm just conscious ये थोड़ा सा heavy होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे. ठीक है, especially most of you, for most of you to be relatively new. आपने इस shape and form में शायद नहीं देखा होगा, पढ़ा होगा पहले, most of you. So इसलिए I'm just trying to go at a pace which is easy for you to absorb. So is that pace okay, guys? This is a very different pace the way I was doing the first sessions. जो FAP वगैरह था उसमें थोड़ा theory ज़्यादा था and most of the pieces were probably would have seen in some shape and form earlier. So मैं उसमें generally additions पे work कर रहा था. जो extra pieces है उस पे ज़्यादा time spend कर रहा था. यहाँ पे मैं scratch से build करने की कोशिश कर रहा हूँ. I'm trying to give you time to note down the stuff in your Excel and stuff like this. So is this piece speed in terms of speed is okay? I just want to get a sense so that in case I need to slow down more, I get a sense of it. Is the speed okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Please do it, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है. So ठीक है. So please revise कर लीजिएगा इतना and then we'll connect next weekend. चलिए bye. Thanks. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.